Hey guys, good evening everyone. So we're going to start with our physics now, and we are going to start with a very important topic, which is motion. In this particular chapter, we are going to do the following subtopics. I'll just tell you about motion. So we're going to do introduction. We are going to study something about mechanics, and we are going to distinguish between rest and motion, in which I'm going to tell you something about relative motion. तो केमिस्ट्री के हम लोग 2 चैप्टर्स ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं. ये हम लोग फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं फॉर क्लास 9 विच इज मोशन, और ये वाले टॉपिक्स मैं आपके साथ आज करूंगी. इंट्रोडक्शन, मैकेनिक्स, रेस्ट एंड मोशन एंड रिलेटिव मोशन. आपके लिए आप जा सकते हो वेबसाइट पे shellys/chemistry@teachmore.com. So this is the website which is going to be launched. इस पे आपके पास पूरे 9th की स्टडी पैकेज इज गोइंग टू कम. सो वीडियोस भी, रिकॉर्डेड वीडियोस भी सारे 9th के उस पे है, आप देख सकते हो. एंड वी आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड टुडे. ओवरव्यू, एज आई जस्ट टोल्ड यू कि हम लोगों ने इंट्रोडक्शन करना है. आज वाले क्लास में मैकेनिक्स करेंगे और हम लोग रेस्ट एंड मोशन करेंगे. ये तीनों टॉपिक्स आज हम खत्म करेंगे. सो लेट्स गो ऑन टू इंट्रोडक्शन. नाउ व्हेनेवर वी आर टॉकिंग ऑफ एनी बॉडी, कैसे कह सकते हैं दैट द बॉडी इज एट रेस्ट और मोशन. सो जो क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है, दैट इज हाउ कैन वी से that a body is at rest or motion. So this is our first question which we are going to answer in this chapter. Distance और displacement में क्या difference होता है? So हमारा next topic जो कि हम इस chapter में करेंगे, difference between displacement and distance. Is there any difference, और अगर कुछ difference है तो क्या difference है? And then we are going to study about एक question जो आपके mind में आता है कि अगर हम लोग बॉल को ऊपर फेंकते तो वो कितने ऊपर जाएगा और कितने टाइम में जाएगा. So we are going to take a relationship between distance and टाइम. वो भी हम लोग इसी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे. सो ये जितने भी हमारे पास क्वेश्चंस हैं और इससे सिमिलर क्वेश्चंस, वो सारे हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, व्हिच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, मोशन, राइट. फिर उसके बाद लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज मैकेनिक्स. ये फिजिकल साइंस की ओल्डेस्ट ब्रांच है, फिजिकल साइंस की ओल्डेस्ट ब्रांच है, और ये हमें पढ़ाती है, इट गिव्स अस एन आइडिया ऑफ स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ अ बॉडी. ठीक है, इसको हम लोग मैकेनिक्स को क्लासिफाई करते हैं इनटू 2 कैटेगरीज और 2 ब्रांचेस. सो one is statistics, or sorry, one is statics and the other one is dynamics. Dynamics का मतलब हम लोग इसमें क्या पढ़ने वाले हैं? We are going to study about kinematics. So mechanics को हम classify कर रहे हैं into statics and dynamics.
स्टैटिक्स जब हम लोग करते हैं, वी आर गोइंग टू स्टडी बॉडीज एट रेस्ट, और यहाँ पे हम लोग स्टडी करेंगे bodies in motion. Okay, now whenever we are talking of mechanics, तो हम लोग इस चैप्टर पे फोकस करेंगे किसके ऊपर? ऑन काइनेमेटिक्स. तो दिस इज गोइंग टू बी आवर फोकस ऑफ कंसर्न. ओवर हियर प्रीवियस क्लासेस में, जूनियर क्लासेस में आपने सुपरफिशियल लुक देखी है, और यू सुपरफिशियली लुक्ड एट डिफरेंट काइंड्स ऑफ मोशन. जैसे कौन कौन से टाइप ऑफ मोशन आपने देखे हैं? यू हैव सीन, you know about rectilinear motion, आपने स्टडी करी है सर्कुलर मोशन, आपने स्टडी करी है रोटेशनल मोशन, और आई होप आपको ये सारी टर्म्स के साथ आप फेमिलियर हो. आपने स्टडी करी है ऑसिलेटरी मोशन, एंड वाइब्रेटरी मोशन, periodic motion, non-periodic motion, and we have also studied about random motion. तो हमने ये सारे के सारे मोशंस के बारे में, हमको स्लाइट आइडिया है, ये सब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे. बट यहाँ पे हम लोग स्पेसिफिकली जब इस चैप्टर की बात कर रहे हैं, तो वी विल रिस्ट्रिक्ट आवर स्टडी टू ओनली टू टाइप्स ऑफ मोशन. बट उन दोनों को हम लोग काफी ग्रेट डिटेल में पढ़ेंगे. सो द फर्स्ट वन इज मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन. So we going to study about motion in a straight line. Straight line जो है वो हो सकती है horizontal. So horizontal का meaning क्या हुआ? That it can be horizontal, it can be vertical, it can be slanted, right? So it can be a straight line, it can be a slanting line, it can be a horizontal line. इस motion को हम generally क्या बुलाते हैं? This is known as rectilinear motion. So we going to study about rectilinear motion in this chapter. और second हम लोग जो पढ़ेंगे that is uniform circular motion. So we going to study about uniform circular motion. एक कोई भी body uniform circular path पे जो move करती है in a constant speed. So that is a uniform speed. So अगर एक circular path हम ले रहे हैं और उस पे uniform constant speed पे वो move कर रही है, that is going to be uniform circular motion. Now let's understand rest and motion. Now यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? Tom and Jerry, they are not fighting. Quite strange guys, but yes, they are not fighting. Both of them, they are sleeping on a mat. So motion at this point we are saying that both of these, Tom and Jerry, they are at rest. So this is what rest is. They are resting, okay? They're chilling guys. और यहाँ पे उन दोनों की लड़ाई शुरू हो गई. So they are going to be in motion, right? You know that they are always, Tom and Jerry, they are known for their fights. They are known for going after one another. So जब वो एक दूसरे के पीछे घूमते हैं तो वो मोशन हो गया. When they are friends, they are at rest. When they are fighting, they are in motion. So let's understand rest and motion over here. जब हम लोग
मोशन की बात करते हैं, मोशन अकॉर्डिंग टू अस इज a word which we are very familiar with, that is movement. ठीक है. नाउ अगर हम लोग एग्जांपल्स ले ले, जैसे हमने ले लिया एक ट्री, या हमने ले ली, ओके लेट्स टेक अ बिल्डिंग, राइट. सो ऑल ऑफ दीज दे आर एट रेस्ट. सो वी आर सेइंग दैट ये सब क्या है, दे आर एट रेस्ट. बट इफ यू आर टेकिंग अ flying bird, or we are taking a moving car, so, or let's take a falling apple. So ye sare, when these all come to our mind, they all are moving, so we can say that they are in motion. अब अगर हम लोग, ये हमारी लेमैन लैंग्वेज में रेस्ट एंड मोशन की डेफिनेशन आ गई. बट विद रिस्पेक्ट टू फिजिक्स, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ फिजिक्स, above statement may be correct, above statement may not be correct. So हमारी थिंकिंग के अकॉर्डिंग एक बिल्डिंग जो है, बिल्डिंग रेस्ट पे हो, राइट. बट वी ऑल्सो नो दैट इफ वी आर टेकिंग, let's take sun over here. So we know that the earth that is going to move around the sun in an elliptical orbit. So let's say this is the earth over here. This is its axis. It is moving around its axis. It is also moving around the sun. Okay, now what are we saying? Earth is rotating about its geographical axis. There are two movements of Earth around the sun. The first one is that Earth is rotating about its geographical axis, and not only that, Earth is also revolving around the sun. Around the sun. So there are two movements of Earth, right? So over here in the solar system, Earth is moving around the center of the Milky Way, and that Milky Way is known as galaxy, और वो जो galaxy है वो खुद से भी move कर रही है. So अगर एक building Earth के ऊपर present है, so can we say that this building is on rest? No. According to physics, the building is not at rest. So in whatever we are discussing over here, we can say that every object is in motion. हर एक चीज मूव कर रही है अकॉर्डिंग टू फिजिक्स. Every object is in motion. Everything is moving. फिर रेस्ट क्या हुआ? अगर हम बोल रहे हैं कि सब कुछ ही मूव कर रहा है, तो रेस्ट क्या हुआ? रेस्ट वो होती है अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, वी से that a body is said to be at rest when its position does not change, when its position does not change with time. With respect to the observer. अगर with respect to the observer position किसी भी एक बॉडी की चेंज नहीं होती, तो it is said to be at rest. So उसी terms में then what is motion? Any body is said to be in motion when its position changes, when its
position changes with time with respect to observer. राइट सो अगर हम लोग बोल रहे हैं कि हमारे पास देयर इज अ ट्री, लेट्स टेक अ ट्री ओवर हियर. So there is a tree, right? And over here there is a train which is moving. So we have a train which is moving over here, and you are sitting at this particular position. So there's a bench over here, and you are sitting at this particular position. So let's say this is position A, this is the tree, and this is position B, right? Now, we are saying when the tree is observed by the observer A who's sitting in the bench, that is you, the tree is at rest. So with respect to A, the tree that is going to be at rest. Because position of tree that is not changing with respect to the observer. It is not changing with respect to you. Now, when the same tree T is observed by someone who's sitting in the train with respect to B position, the tree is in motion. So we can say that this is known as what? It is known as relative motion. So body is at rest or in motion, that will depend upon another body. And we can say that rest and motion are relative terms. What does relative mean over here? Relative over here means in relation to an observer. In relation to an observer. Right? So, in relation to the observer, हम लोग बोल सकते हैं कि whether एक object जो है that is at rest or in motion. Okay, so we can say over here another thing which is important is that when we're talking of plants, plants also show motion. कैसे मोशन शो करते हैं ये आपने देखा होगा कि सनफ्लावर जो है वो एकदम से सन की तरफ को अपनी मूवमेंट शो करता है. तो प्लांट्स मूव टूवर्ड्स स्टिमुलस, राइट? जब वो ग्रो कर रहे हैं तब ऑल्सो दे आर मूविंग. प्लांट्स ऑल्सो मूव when they grow in size, right? बट बिकॉज ये सारी मूवमेंट्स बहुत ही स्लो है तो इसलिए हम लोग ये बोलते हैं कि प्लांट्स दे आर नॉट मूविंग. बट अकॉर्डिंग टू फिजिक्स प्लांट्स इज आल्सो मूविंग. नाउ देयर आर सर्टेन ऑब्जेक्ट्स व्हिच मूव वेरी स्लोली विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर. जैसे वी हैव टेकन, लेट्स टेक अ क्लॉक. अब इस क्लॉक की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एक आर का हैंड है कि नहीं, और एक हमारे पास मिनट, और एक हमारे पास लेट्स से वी हैव अ सेकंड. सेकंड्स का हैंड हो गया, आर का हैंड हो गया और मिनट्स का हैंड. आर का जो हैंड है वो बहुत ही स्लोली चलता है. सो फिर ऑब्जर्विंग फॉर अ सेकंड, जो आर का हैंड है दैट इज गोइंग टू बी एट रेस्ट, राइट? बट otherwise it is definitely. So this is all what we have in our today's class, guys.
are going to go on to our next topic in the next class. So just stay